रामानुजाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरूपसहितायां एकोनविंशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। अथान्यचरितं शम्भो शृणु प्रीत्या महामुने यथा बभूव दुर्वासा शङ्करो धर्महेतवे ब्रह्मपुत्रो बभूवातितपस्वी ब्रह्मा विप्रभु अनसूयापतिर्धर्मा ब्रह्माज्ञापतिपालका निर्देशाद ब्राह्मणो हि सस्त्रीका पुत्रकामया सत्रयक्षकुलनामानं ययोच तपसे गिरिं प्राणानायम विधिव निविन्धर्या तटे तपक्षार सुमहद्वन्द्वो शब्दशन्त मुनिय ईश्वर कक्षी दिवैकारी महाप्रभु समे पुत्र वरं दध्यादिति निक्षित मानसा बहुकालो व्यतीयाय तस्मिंस्तपति सत्तपा आविर्भूव तस्मात्तु शुचिर्ज्वाला महीयसी तया निखिला लोका दग्धप्राया मुनीश्वरा तथा सुरशर्य सर्वे पीडिता वासबाधया अथ सर्वे वासबाध्या सुराक्षमुन्यो मुने ब्रह्मस्थानं ययुः शीघ्रं तज्ज्वालातीव्र पीडिता नत्वा नुत्वा विधिं देवास्तत्स्वदुःखान्विय वेदयन् ब्रह्मा सह सुरैस्तात विष्णुलोकं ययावरं तत्र गत्वा रमानाथं नत्वा नुत्वा विधिसुरे स्वदुःखं तस्माच्छाख्यो विष्णवेनन्तकं मुने विष्णुश्च विधिना देवै रुद्रस्थानं ययो धृतं हरं प्रणम्य तत्रत्य तुष्टाव परमेश्वरं स्तुत्वा बहुतया विष्णुं स्वदुःखं च न न्यवेदयत् सर्वं ज्वालासमुत्थुतमत्रे च तपसा परम् अथ तत्र समेतास्तु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा मुने सम्मन्त्रयाचक्रुन् योऽन्यजगतां हितं तदा ब्रह्मादयो देवास्त्रयस्ते वरदर्शभा जगमुस्ताक्षं शीघ्रं वरं दातुं तदर्शये स्वचेते चिन्तास्तानस् दृष्ट्वा त्रिमुनिसतं प्रणनाम च तुष्टाव वागीभविष्टाभिरादरा तथा स विस्मितो विप्रास्तानुवाच कृताञ्जलि ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा ब्रह्म विष्णु हराभिधान् अत्रिरुवाच हे ब्रह्मन् हे हरे रुद्र पूज्यायसि जगत्तां मता प्रभवक्षेशरा सृष्टिक्षान् संहारकारका एक एव मया ध्यात ईश्वरा पुत्रहेतवे यः कक्षीदीक्षरख्यातो जगतां स्वस्त्रिया सह यूयं त्रयसुरा कस्मादागता वरदर्शभा इतन्मे संशया चित्वा ततो दत्ते पिस्तं वरम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युचुस्ते सुरास्त्रय यादृकृतस्ते सङ्कल्पस्त्यथवा भून्मुनीश्वरा वयं त्रयो भवेशाना समाना वरदर्शभा अस्मन् दशभवास्त समादविष्यन्ति सुतास्त्रय विदिता भुवने सर्वे पित्रो कीर्तिविवर्धना इत्युक्त्वा ते त्रयो देवा स्वधामानि ययुर्मुदा वरं लब्ध्वा मुनिसोऽथ जगाम स्वाक्षरं मुदा यतो न स्यूयया प्रीतो ब्रह्मानन्दप्रदो मुनि अथा ब्रह्मा हरिशम्भुर्वतेरुस्त्रियां तथा पुत्ररूपे प्रसन्नास्ते नानालीलाप्रकाशका विद्वेश्वरं शाधिर्भुर्जज्ञे अनसूयायां मुनीश्वरात् प्रबभूवो दधिता क्षिप्तो देवे स एव हि विष्णोराशशात् स्त्रियां तस्यामत्रे दतो व्यजायता संन्यासपर्यत्यङ्गेन वधिर्ता परमा मुने दुर्वासा मुनिः शार्दूल शिवां चान मुनिसतं जज्ञे तस्यां स्त्रियामत्रेर्वरधर्मप्रवर्तका भूत्वा रुद्रक्ष दुर्वासा ब्रह्मो तेजो विवर्धना चक्रे धर्मपरीक्षां च बहुना स दयापरा सूर्यवंशे समुत्पन्नो यो अम्बरीश्वरो नृपोऽभवत् तत्परीक्षां काशीतस्स त्वां शृणु त्वं मुनीश्वरा सोमम्बरीशो नृप्वर सप्तद्विपरसापति नियं हि चकारासावेकादश्यां व्रते दृढम् एकादश्या व्रतं कृत्वा द्वादश्यां च कारणं
करिष्यामीति सुदृढस्य सङ्कल्पस्तु नराधिपा ज्ञात्वा तन्नियं तस्य दुर्वासामुनि सतं तदन्तिकं गतः शिष्यैर्बहुभिः शङ्करांशज कारणे द्वादशी स्वलम्पा ज्ञात्वा यावत् भोजनं कर्तव्यस्तितस्तावदागतं स नय मन्त्रय तथा स्नानार्थमद्दुर्वासा शिष्य संयुता विलम्बकृत् वांस्तत्र परीक्षाथ मुनिर्बहु धर्मविघ्नं तदा ज्ञात्वा स नृपशास्त्रशासनात् जलं प्राश्य स्थितस्तत्र तदागमनकाङ्क्षया एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्वासा मुनिरागता कृताशनं नृप्यात्वा परीक्षाथ दृप्ताकृति चुक्रोधाति नृपे तस्मिन् परीक्षार्थ ऋष्यस्य स प्रोवाच वचनं दूरं स मुनिशङ्कराशज दुर्वासोवाच मा निमन्त्रय नृपा भोज्य जलं पीतं त्वयाधम दर्शयामि फलं तस्य दुष्टदण्डधरोभावम् इत्युक्त्वा क्रोधतामाक्षो नृपं दग्धुं समुद्यत समुत्तस्थो द्रुतं चक्रं ततस्थं रक्षार्थमैक्षरं प्रज्वलालातीतं चक्रं मुनिदग्धुं सुदर्शनं शिवरूपं तं ज्ञात्वा शिवमाया विमोहितम् एतस्मिन्नन्तरे व्योम बाणयुवाचा शरीरिणी अम्बरीशं महात्मानं ब्रह्मभक्तं च वैष्णवम् व्योमवाण्युवाच सुदर्शनम् इदं चक्रं हर्ये शम्भुनां कृतं शान्तं कुरु प्रज्वलित मध्य दुर्वाससे निरिप्प दुर्वासायं शिवं साक्षाद्यचक्रं हरिर्हितम् एवं साधारण मुनिजन जानीहि नृपोत्तमात् अधर्मपरीक्षार्थमागतोऽयं मुनीश्वर शरणं याहि तस्याशु भविष्यत्यन्यथादय मुनीश्वरवाच इत्युक्त्वा च नभोपानि विराम मुनीश्वर अस्तावितस्फाराशं तम्बरीशोऽपि चादरात् तम्बरीशुवाच यद्यस्ति दत्मिष्टं च स्वधर्मो स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्वैरस्त्रं प्रशामयतु यदि नो भागवन् प्रीतो मदक्तो भगवत्सला सुदर्शन मित्रचास्त्रं प्रशामयतु विशेषता नदीश्वरवाच इति स्तुवती रुद्राग्रे शैवं चक्रसुदर्शनम् अशाम्यत् सर्वथा ज्ञात्वा त्वं शिवाशं सुलब्धति अथाम्बरीश स नृप प्रणाम च तं मुनिम् शिवावतारं सन्ध्याय स्वपीडाक्षार्थमागतं सुप्रसन्नमो बभूवाथ स मुनिशङ्करांशज भुक्त्वा तस्मै वरं दत्त्वा स्वाभीष्टं स्वालयं ययो अम्बरीश परीक्षायां दुर्वासक्षरितं मुने प्रोक्तमन्यचरितं त्वं शृणुतस्य मुनीश्वर पुनर्दाशर्थे चक्रे परीक्षायां नियमेन वे मुनिरूपेण कालेन या कृतो नियमो मुने तदैव मुनिनाथेन सौमित्री प्रेषितो हठात् त्वं तत्यजयाज द्रुतं रामो बन्धुप्रणवशान्मुने सा कथा विदिता लोके मुनिभिर्बहुदोदिता नातो मे विस्तारात् प्रोक्ता ज्ञाता यत्स्वर्था बुधे नियं सुदृष्टं दृष्ट्वा सुप्रसन्नो भवन्मुनि दुर्वासा सुप्रसन्नात्मा वरं तस्मै प्रदत्तवान् श्रीकृष्णन्यं स्यापि परीक्षां स चकारः मां शृणु त्वं मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां च तां ब्रह्मा प्रार्थनया विष्णुर्वसुदेव सुतोऽभवत् धराभारावतारार्थं साधुना रक्षणाय च हत्वा दुष्टान् महापापान् ब्रह्मद्रोह करान् खलान् रक्षनिखिलान् साधून् ब्राह्मान् कृष्णामभाक् ब्रह्मभक्तिं चक्राति स कृष्णो वसुदेवजा नित्यं हि भोजयामास सुरसान्
ब्रह्मान् बहून् ब्रह्मा भक्तो विशेषेण कृष्णश्रेति प्रथामगात् सन्दृष्टकाम स मुनि कृष्णान्तिकमगान्मुने रुक्मणीसहितं कृष्णं मग्नं कृत्वा रथे स्वयं संयोज्य संस्थितो वाहं सुप्रसन्न उवाहतं मुनिरथार्थस् सुमूर्तिर्य दृष्ट्वां तां दृढतां परां तस्मै भूत्वा सुप्रसन्नो व्रजाङ्गत्वरं ततो द्युन्ध्यामेकदा स्नानं कुवर्णकनो बभूवः लज्जितो भून्मुनिश्रेष्ठो दुर्वासा कौतुकी मुने तज् ज्ञात्वा द्रौपदी स्नानं कुर्वती तत्र चादरात् तलजाच्छादयामास भिन्स्वाच्छलदानता तदादाय प्रवाणे नागतं स्वनिकटं मुनितने तेनाच्छाद्य स्वगृहां च तस्य तुष्टो बभूव स द्रौपद्यै च वरं प्रादत्तं विवर्धनं पाण्डवानां सुखिनक्षरे चक्रे द्रौपदी त्वद्रात् पुनः हंसडिम्बो नृपो क्वचित् स्वावमानकरोड्खलो दत्त्वा निदेशं च हरेनार्चयामास स प्रभु ब्रह्मतेजो विशेषेण स्थापयामास भूतले संन्यासपद्धति चैव यथा शास्त्रविधिक्रमं बहूनुदारयामास सुपदेशं विबोध्य च ज्ञानं दत्त्वा विशेषेण बहून्मुक्तांश्चकार स इत्थं चक्रे स दुर्वासा विचित्रं चरितं बहु धन्यं यशस्य मायुष्यं शृण्वत सर्वकामदं य इदं शृणुयादुक्ता दुर्वासचरितं मुदा श्रावयेद्वापराणि पराण्यक्ष स सुखीः परत्र च इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्रसंहितायां दुर्वाक्चरित्रवर्णनं नाम 19 अध्यायः।